বানাক্ৰান্ত জনস্বাস্থ্যৰ বাবে কাম কৰি গৈছে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনে চিকিৎসালয় খোৱাপানী যোগান আদি বিভিন্ন দিশত কাম কৰি আছে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনে নেপালীখুটিত জনস্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত এটা বিশেষ কাম কৰিছে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনে পিএছচিৰে সহযোগ কৰি নেপালীখুটিত ইনষ্টল কৰিছে আল্ট্ৰা ৱাটাৰ প্লাণ্ট বানাক্ৰান্তৰ জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মুহূৰ্তত কাম কৰি আছে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনে চিকিৎসালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পানী যোগানলৈকে এটো হৈছে আল্ট্ৰা ৱাটাৰ প্লাণ্ট এই প্লাণ্টটো পিএইচচি বিভাগৰ লগত জড়িত হৈ ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনে নেপালীখুটিকে ধৰি বিভিন্ন বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত তেওঁলোকে ইনষ্টল কৰিছে এই যেটো পানী যদি দেখা পাইছে আপুনি এই পানীটোৰ পৰা এই পানীটো দেখা পাইছে আপুনি এই পানীটো হৈছে একেবাৰে লেতেৰা পানী কিন্তু এই পানীটোৰ পৰাই ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনে এই যেটো ৱাটাৰ প্লাণ্ট হয় এই ৱাটাৰ প্লাণ্টৰ জৰিয়তে বিশুদ্ধ খোৱা পানী উলিয়াই দিব পাৰে যেতিয়া মেচিনটো ইনষ্টল হ'ব মেচিনটো ইনষ্টল হোৱাৰ লগে লগে এইফালেদি ওলাই আহিব বিশুদ্ধ খোৱা পানী সেই লেতেৰা পানীটোৰ পৰা এইফালেদি ওলাই আহিব একেবাৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী আৰু এইফালেদি ওলাই আহিব যিখিনি লেতেৰা থাকিব সেই লেতেৰাখিনি এইফালে ওলাই আহিব অৰ্থাৎ জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি একেবাৰে সজাগ আৰু সচেতন হৈ ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনে কাম কৰি গৈ আছে এতিয়া মই যেটা ক'লো যে লেতেৰা পানীৰ পৰা বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাই যাব কিন্তু স্বাভাৱিকতে সকলোৱে মনত প্ৰশ্ন থাকিব যে সেই পানীত থকা বীজাণু কি হ'ব তাৰো ব্যৱস্থা আছে এয়া হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে ইউনিসেফৰ প্ৰজেক্টৰ অধীনত অহা এসমূহ প্লাণ্ট হয় ৱাটাৰ প্লাণ্ট হয় পিএইচচি বিভাগৰ হাতত আছে পিএইচচি বিভাগে আনিছে তেওঁলোকে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনে এই গোটেই কামখিনি তেওঁলোকে কৰি আছে তেওঁলোকে ইনষ্টলেশ্যনৰ কামখিনি কৰিছে ইয়াত তেওঁলোকে টেবলেট অৰ্থাৎ বীজাণু মৰাৰ যিখিনি টেবলেট সেই টেবলেট ইয়াত দিয়া হয় তাৰ পাছতেই বিশুদ্ধ গোটেই পানীটো ইয়াৰ পৰা মানুহক খাব পৰাৰ উপযোগী কৰি তোলে আমি ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম अभी कितना इंस्टॉल हो गया है अभी तक हमारा ये वाला पीएचई वाला और यूनिसेफ मिला के 6 से 7वां यूनिट ये है उसका काम क्या है ये थोड़ा बता दीजिए पानी में से जो भी बैक्टीरिया वायरस जो भी है वो निकाल देता है और पानी प्योर रहने के लिए हमने मतलब इसमें एक क्लोरीनेटर दिया हुआ है क्लोरीन ऐड होता है जो कि 1 ppm होता है आप 1 घंटे बाद उसका देखेंगे तो 0.2 ppm पीने लायक पानी होता है जो भी अगर इनकेस जर्म्स आ जाता है आगे तो वो मारने के लिए क्लोरीन ऐड करते हैं अब मेरे को ये बताइए रिलायंस फाउंडेशन और क्या क्या काम कर रहा है रिलायंस फाउंडेशन एक तो है कि सबसे बड़ा वनतारा जो जानवरों के लिए मेडिसिन और जो भी है वो कर रहे हैं दूसरा हम लोग हाइजीन एंड सैनिटेशन वाला भी काम कर रहे हैं और कुछ ड्राई फूड राशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ कम्युनिटी किचन भी प्रोवाइड कर रहे हैं और स्मॉल वाला शेल्टर किट है उसमें तारपुलिन बकेट ये वाला भी है ये वाला ही कर रहे हैं और ये हम लोग जो गांव विलेज लेवल पे जो वाटर सप्लाई सिस्टम है उसको रिस्टोर करके दे रहे हैं अभी तक वो 9 सिस्टम हमने रिस्टोर कर दिया है मतलब यहाँ पे पंचायत बोलते हैं या जे हाँ वो वाला 9 सिस्टम हमने अभी तक रन कर दिया है और भी हमारा 6 ऑनगोइंग है वो भी 1 या 2 दिन में वो भी रन कर देंगे जो पूरे गाँव के लिए वो पीने का पानी हो अभी कपड़ा धोने के लिए या जो भी क्लीन पानी नहीं है इनके पास तो नल में आ रहा है तो लोगों के लिए हेल्पफुल है ये सब प्लांट और कितना इंस्टॉल करेगा रिलायंस फाउंडेशन अभी तक और भी डीसी ऑफिस में मेरे हिसाब से 5 है उनके पास वो लगा रहे क्योंकि अभी तक रोड चालू नहीं हुआ था अभी रोड चालू हुआ है तो जगह जगह पे हम लोग उनका है बट रिलायंस उनको टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है